So last time I was showing you the applications of conservation of momentum. Uh, so today we are going to हाँ मैंने कुछ होमवर्क दिया हाँ होमवर्क दिया था हाँ किया सबने वो क्वेश्चन हाँ हो गया क्वेश्चन हुआ था वो I think the question was something like this. सही था ना? This was M हाँ स्मॉल एम ही लिखा है तो इसमें पहले हम करेंगे माइनस एम जी एच डैश सॉरी प्लस एम जी एच is equal to half mv1 square plus half mv2 square and mv1 is equal to mv2. So for the first part, I have taken this as the system and I am applying the work energy theorem and conservation of momentum on this. So to find out V1, I will get 2 mgh is equal to mv1 square plus capital V2 square, which will be m square v1 square by m square. m cancel हो जाएगा, ये m cancel हो जाएगा. So v1 will be equal to root of 2ghm upon m plus 1. And now I will assume that the block is here and I will take this as the system and I will apply work energy theorem minus mgh dash is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. And I will again apply the law of conservation of momentum. mv1 is equal to m plus mv2. So I'll get minus mgh dash. So this is for the second system. Is equal to half m plus m into m square v1 square on m plus m whole square minus half m v1 square. ये कैंसिल हो गया m plus m minus gh dash is equal to half m upon m plus m into v1 square, 2ghm upon m plus m minus half 2ghm upon m
V1 अगेन मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे V2 होना चाहिए ना। कहाँ पे? जब हम सेकंड सिस्टम ले रहे हैं तो यहाँ पे V2 होना चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं भाई, छोटे छोटे डायग्राम बनाना। ऐसे है ना इनिशियल, फिर ऐसे हो जाएगा। फाइनली ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? हाँ So G two H dash is equal to H M upon M plus M 1 plus M by M. देख लो भाई मेरे स्टेप्स में कुछ गड़बड़ ना माइनस होगा ना। माइनस। तो ये हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा H dash is equal to H M square. If you want to write it really neatly, then it will be 1 plus M by M. आया समझ में सबको क्या किया है मैंने? What is to be done here? फिर सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? आई थिंक सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया था। क्या था सेकंड पार्ट? याद नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट में रेशियो निकालना था मासेस का, सो दैट द ब्लॉक क्लाइंब्स ऑन दी वन। मासेस निकालना था, रेशियो निकालना है, सो दैट ब्लॉक क्लाइंब्स ऑन द वेज ओनली। ओ हाँ 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 भाई, उसके लिए क्या करेंगे बताओ बताओ भाई। हाँ क्या करेंगे उसके लिए? व्हाट शुड हैपन? व्हाट शुड हैपन? बड़े वाले ब्लॉक का वेलोसिटी जब वो नीचे आता है, छोटे वाला ब्लॉक उसके वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड। तो जब हमारे पास, अब इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद ये लेफ्ट वाला वेज कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से जाता रहेगा और ये ब्लॉक जो है यहाँ पे चढ़ेगा। फर्दर स्टिल ये v1 से जा रहा है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है जब ये दोनों v से चल रहे हैं।
उसके बाद से फर्दर स्टिल ये v1 से जाता रहेगा, लेकिन अब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। इसकी जो ये फाइनल वेलोसिटी है should be less than v1 for climbing wedge once. So basically now you will take this as the system, okay, and you'll find the final velocity of this and just put it equal to v1. That's it. आपको रेशियो मिल जाएगा सर वो वाला वेज V2 से जा रहा था ना पीछे। v2, सॉरी। Okay. और क्वेश्चन चाहिए या हो गया? हो गया। बोलो, और क्वेश्चंस? वन मोर अभी करना पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट में करना पड़ेगा, 5 मिनट्स में करना पड़ेगा।
है। अच्छा है, मेरे ख्याल से रूट भूल गया है शायद। सर एक मिनट, वो गलत है। कर्ष तेरा तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। हाँ सर, एक मिनट। तरुण सही किया। तो दीक्षा इसका डायमेंशन देखो जरा। हाँ, ये है क्या? मुझे सबके आंसर गलत क्यों लग रहे हैं? नहीं, मेरे को गलत लग रहा था। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? मेरे को सबके आंसर क्यों गलत लग रहे हैं? क्या हो गया ये? या तो मुझे कुछ हो गया। अच्छा, लेट मी ट्राई। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। Let me think. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आंसर ये आना चाहिए। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा निकाला, मेरे से गलती। सॉरी सॉरी। हाँ, सो आंसर विल बी 2m। नहीं, ये तो मुझसे ही कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या है ये?
यही निकाला है ना? आंसर क्या निकाला? तो वहाँ पे मुझे 2 नहीं आ रहा है रूट के बाहर, सर बस हाँ। M आ रहा है। मुझे स्मॉल एम भी आ रहा है ऊपर। हाँ सर मैंने चैट पे भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए। मेरे को भी ऊपर स्मॉल एम आ रहा है। मैं वो चैट पे देख रहा था ना। मेरा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा मैंने क्या किया? ओके, सो लेट मी या यहाँ पे स्मॉल एम ही आएगा, याद नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ। So there are two ways of doing this. Okay, now you decide what to. There are two ways of doing this. The first way is the long way, which we have been doing actually up till now. Second way is shorter, but for the second way, I need to complete the theory. So basically, what is going to happen here is that, let's see if we agree on the theory first. Basically, what is going to happen here is that picture one will be this guy comes down, इसका velocity root to gr रहेगा, और ये wedge अभी तक हिला नहीं है. Picture two, the block starts to climb the wedge. Okay. The block starts to climb the wedge and reaches some height on the wedge. जब इसकी velocity now, if you have found this v, then your answer is wrong. Okay? यही तो नहीं निकाला. अब ये ब्लॉक जब नीचे आना शुरू करेगा वापस से, और जब यहाँ आ जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी v max होगी. This is what we have to find. So basically, work done by the Earth is equal. I'm assuming that इसकी velocity यहाँ पे v1, पीछे आगे है मेरे को नहीं मालूम है कहाँ. Work done by the Earth is equal to, किसका रीजन बचा? किसका रीजन? अच्छा, v max यहाँ क्यों है? वो दैट्स वेरी सिंपल. जब तक ये वाला ब्लॉक इस सेमी सर्कल के राइट क्वार्टर में रहता है, जब तक ब्लॉक इस सेमी सर्कल के राइट क्वार्टर में रहता है, तब तक इस वेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा इस डायरेक्शन में, एंड तब तक वो एक्सेलरेट करता रहेगा. Maximum velocity of the wedge will be reached when this horizontal force will go away. Right? जब तक वो एक्सेलरेशन में है, जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है. जब ये वापस बीच में आ जाएगा, वेज के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी. इनफैक्ट जब वो ब्लॉक वेज के लेफ्ट
पार्ट में जाएगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी कम होएगी वापस। आया समझ में दीक्षा? So 0 is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. And the law of conservation of momentum gives so this is the initial picture, this is the final picture. Right? So basically we have mgr is equal to half mv1 square plus half capital M v max square. Now, is the solution to this v max is equal to this, or is it what you have written? ये सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? I hope this is understood by everyone. By the time I finish this lecture, hopefully, or at least by next lecture, I should have a shortcut ready for you. For those of you who have studied collisions before, this is a simple collision between small m and capital M, जहाँ पे v1 की वैल्यू √2gr है और v2 की वैल्यू 0 है, v2 प्राइम निकालना है, v2 डैश निकालना है। बताओ 2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? I don't know. Can anybody solve this? I showed you how to solve this, right, in the last class. Can anybody tell me whether my answer is correct or incorrect? तो सही है। मैं सही हूँ या नहीं हूँ? हाँ सर, आपका आंसर सही है। तो आप लोग का 2 का फैक्टर कहाँ गायब हो रहा था? Why were you not getting a factor of 2? मुझे नहीं समझ में आ रहा। सर मैंने तो गलती कर दिया था अज्यूम करने में। बाकी लोग? सर मैंने वी मैक्स गलत लिया। Okay. Okay. सर इसमें एक डाउट है सर, जब ब्लॉक हाइट आर पे है तभी सर नॉर्मल फोर्स जो लगता है वो हाईएस्ट होगा, हाँ तो फिर एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा होगा, हाँ और जैसे ब्लॉक नीचे कम होते जा रहा है हाँ। तो वी मैक्स नहीं 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 नहीं, you are confusing again. I keep on telling you, keep on confusing. Acceleration produces a change in velocity. Acceleration ज़्यादा है, velocity में change ज़्यादा आएगा. Acceleration कम है, velocity में change कम आएगा.
एक्सेलरेशन ज्यादा से कम हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम से ज्यादा हो रही है तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। आया समझ में कुछ? मैं आपको धक्का दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली। पहले मेरे पास जब मैंने धक्का देना शुरू किया, आई वॉज नॉट टायर्ड, बट एज टाइम गोज डाउन, सपोजिंग दैट यू आर ऑन a skateboard, or I don't know, you are in a you are in a you are in a cart or something like that, and I am pushing that cart. So initially I had lots of energy और मैंने खूब ताकत से कार्ट को पुश किया, तो आपका वेलोसिटी तो इंक्रीज किया, लेकिन अब जब मेरे पास धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लग जाएगी, मैं जो पुश कर रहा हूँ उसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा बना रहेगा। आपके कार्ट की वेलोसिटी अगर एक पॉइंट पे 100 मीटर पर सेकेंड है और मैं थक हार के अब केवल एक ही न्यूटन फोर्स लगा पा रहा हूँ, तब भी आपकी वेलोसिटी 100 से 100.1 तो जाएगी, 100.2 तो जाएगी, वेलोसिटी तो बढ़ेगी, कुछ भी हो जाए। ना? So you are confusing the rate of change of acceleration with the rate of change of velocity. Okay, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. So now I want to talk about something called पारतंत्र को समझ में आया ना? तभी तो मेरे तब वो मैं फॉर्मूला ही तो यूज कर रहा हूँ, और मैं कहाँ से प्रोड्यूस कर दूंगा आंसर. So now we wish to talk about the concept of impulse. So impulse in physics is nothing but change in momentum. Okay? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ तो हम बोलते हैं that a linear impulse has been imparted to the system. Okay? Change in momentum means that a linear impulse has been imparted to the system. Now, change in momentum का मतलब होता है चेंज इन mv, बट अगर हम मास को कांस्टेंट लेके चले हैं तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी अगर होएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, we will say that an impulse has been imparted on the system. The force on the system is equal to delta p upon delta t, which is equal to impulse divided by delta. Okay. Therefore, we can write impulse as integral of ft. This is also, we can also do this. The symbol that we will use for this quantity called impulse will be J. Okay, and it is a vector quantity.
Now there is a completely and absolutely different concept in physics which is called the impulsive force. तो जो जो क्वांटिटी कॉल्ड इम्पल्स है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, वेरी सिंपल. It is just change in momentum. That's it. So momentum is something, change in momentum is impulse. नहीं 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 पार नहीं 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 हाँ इसमें that's why I have to take it slow. So what happens is that sometimes you will hear the statement, अभी जैसे पार्थ ने भी बोला, आपने लिख के भेजा मेरे को, force acting on an object for a very short time is called impulse. This is not true. Okay, this is not true. An impulse on a system is imparted if the momentum of the system changes. The change in momentum of the system can be sudden or it can be over a long period of time. It does not matter. So in this question, or the next question, in this question, an impulse was imparted by the block on the wedge, and therefore the velocity of the wedge changed from 0 to v2. Right? Okay. An impulse was imparted by the block on the second wedge. As a consequence, the velocity of the second wedge changed from 0 to some v, and it will keep on changing to 0 to some v max value. जब वो बाहर आ जाएगा, वो उतर जाएगा. An impulse is imparted by the block onto the wedge. Therefore, the velocity of the wedge changes from 0 to Vmax. Now, this change was not sudden, it was gradual. Still, we will call this impulse. Okay, so, impulse is another way of talking about change in momentum. Impulse is, in fact, just change in momentum. Whether this change in momentum takes place suddenly or whether it takes place over an elongated period of time does not matter. In both cases, change in momentum will be called impulse. There is another concept in physics called the impulsive force, which has a similar sounding name, therefore the confusion. In fact, I will also end up calling the impulsive force impulse. मैं भी बोलते रहूँगा, लेकिन impulse एक बिल्कुल ही अलग क्वांटिटी है फिजिक्स में, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया. Impulsive force क्या होती है? So supposing that I am making a graph between time and force, magnitude of force. I'm making two graphs between time and magnitude of force. So on one object, I notice that the force is 0, suddenly changes, and then 0 again. On another object, I notice that the force is constant,
suddenly changes and then constant again. So if this delta t, if this delta t is small and this F max is large, right? Then we are dealing with impulsive forces. So सर इसी की डेफिनेशन बताई थी आप। हाँ मेरे को मालूम है, हाँ हाँ, यस यस, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि नाम वैसे ही है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इम्पल्स कुछ और है और इम्पल्सिव फोर्स कुछ और है। Having said this, out of sheer laziness in the future, मैं भी impulsive force नहीं बोलूँगा, मैं भी impulse बोलते जाऊँगा। लेकिन as a student, you cannot be lazy. Therefore, you have to keep in mind that I am talking about impulsive forces and not the impulse for which I have given the definition. So, if F max is large and delta T tends to 0, then such a force is called impulsive force. Okay. By the way, this is a very nice, very interesting graph. Anybody know the name of this graph? नहीं, free fall नहीं. So Kushi is saying free fall. Right? I'll tell you why. नहीं. हाँ. Yes. मैं सब बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। खुशी ने बोला free fall. Let's see what this means. This is the force on me right now. This is time. Okay, I'm sitting on my chair right now. So the force on me is 0. Net force on me is 0. Okay, and suddenly, भगवान न करे, ये बिल्डिंग गायब हो गई। अब अगर ये बिल्डिंग गायब हो गई और मैं 15th फ्लोर पे हूँ, तो अब मेरे ऊपर क्या ग्रेविटी आ जाए, क्या फोर्स आ जाएगी? Force due to gravity. So suddenly the force on me will become like this. Right? This is free fall. ठीक है ना? पहले नेट फोर्स 0 था और अब जो है अच्छा मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। हाँ मैंने मैग्नीट्यूड देखा है। हाँ नीश, बिल्कुल अभी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। Because I'm talking about mod of F, this is not impulsive. It is not impulsive. Bouncing of a ball after hitting the ground, that is impulsive. Okay. और क्या क्वेश्चन पूछा था मुझसे? बाउंसिंग में पार्ट, यस, इम्पल्सिव फोर्स। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। Jerk is defined as the rate of change of acceleration. Okay, so again, it has got nothing. Jerk is simply a mathematical quantity, which is not useful
in analysis of motion. Sometimes it can be useful, definitely, but it is not a required quantity for the study of motion. Right? Okay? So इससे कुछ लेना देना नहीं. Although the word jerk does conjure up कि हाँ अचानक से धक्का लगा है तो ऐसा होना चाहिए. हाँ. Bouncing of ball after hitting the ground बिल्कुल impulsive होएगा. First graph was of collision. Yes, it could have been. It could have been. Yes. Hitting the cricket ball, definitely. So, what we need is, we need to understand which forces can be impulsive and which forces can never be impulsive. So, gravity can never be impulsive. You can never have impulsive gravitational force. Okay? Unless something mind-boggling like black hole appear हो गया बाजू में और फिर गायब हो गया, तो ऐसा कुछ बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वियर्ड स्टफ हो जाए तो बात अलग है. But gravity can never be impulsive. Gravitational force can never be an impulsive force. Spring force can never be impulsive force. Never, ever. Normal reaction may be impulsive. Okay. Normal reaction may be impulsive. If normal reaction is impulsive, then friction may be impulsive. And tension force may be impulsive. Okay? Spring force impulsive क्यों नहीं हो सकती है? For spring force to be impulsive, the length of the spring must change very suddenly. And since the spring ends are connected to masses, right? Since the spring ends are connected to masses, for the length of the spring to change suddenly, right, the masses should move with unimaginable acceleration, very high acceleration. Therefore, spring forces can never be impulsive. Okay? The diagram of a spring force, in fact, you can think of it like this, that the diagram of the spring force cannot be the one that I have drawn. So, इसका क्या मतलब हुआ तरुण यार? टाइप ऑफ टेंशन क्या होता है? नहीं, स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी impulsive. आप कभी किसी को स्प्रिंग से मार नहीं सकते हो, ऐसे सोचो ना. मतलब कि इनफैक्ट आप ग्रेविटी से किसी को नहीं मार सकते हो. So what I mean is that अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, right? So what will happen is that within that short duration of time, जब मेरा हाथ उसके फेस को टच कर रहा है या सर को टच कर रहा है, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मेरे हाथ और फेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है.
that is impulsive. But if I have a spring on my hand and I start to hit a person, right, then be that will not be impulsive. हाँ बिल्कुल अनीश, collisions are impulsive because normal reaction is impulsive. I'll give you a couple of examples. Just tell me whether the forces are impulsive or non-impulsive. So example number 1. शाना के यहाँ पे दो स्फीयर की बात हो रही है, तो बॉम्ब डेटोनेटर कहाँ से ले आ रहा है? क्या बॉम्ब डेटोनेटर का क्या मतलब हुआ? मैंने क्या बताया तेरे को? There can be 7 objects in the surrounding of a object. क्या क्या क्या? Earth, surface, string, spring, bomb detonator, and ऐसा तो नहीं बोला था ना मैंने? ओके ओके, अब क्या कर रहा है? So what initiates the term impulsive force in your mind? Okay, for example, शौनक के दिमाग में आया बम फट गया, तो is that impulsive force or not? Definitely impulsive force. But impulsive force by what on what? Well, a bomb is an explosive device which contains certain metal bits, supposing. Then when the explosion occurs, all the metal objects that the bomb is made up of, they will acquire an impulse. Okay, right? So they will, पहली बार मैंने गलती किया, ये गलती बार बार होएगी, they will be under the influence of an impulsive force. Okay? They will experience an impulsive force. An impulsive force can only be balanced by another impulsive force. So before I give the examples, a couple of points that I have to tell you. So point number 1 is that impulsive forces act for a very short time. Number 2, gravity and spring force can never be impulsive. Number 3, friction is impulsive only when the corresponding normal reaction is impulsive. So if the normal reaction between two surfaces is not impulsive, then the friction will also not be impulsive. If the normal reaction between two surfaces is impulsive, then friction may be impulsive. And number 4, an impulsive force must produce a sudden change of momentum unless
it is balanced. Okay, and last point and the most important point, an impulsive force can only be balanced चैतल तुम्हारे कीबोर्ड में कोई गड़बड़ हो गया by another impulsive force. Right? So these are the important points. These are the things that you have to keep in mind for impulsive forces. नहीं नहीं impulse can be created or can be caused by any force. Okay, impulse can be created by any force, but impulsive force produce a sudden change of momentum, sudden change of velocity. ये लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो, now please answer. So when the collision between these two guys happens, नहीं यार तेरा स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया. So we have N1, N1, N2, N3. अच्छा एक एक मिनट रुक गया, एक मिनट रुक गया. मेरे को बताइए आप N1, N2, N3 में से कौन से फोर्सेस इंपल्सिव हैं और कौन से फोर्सेस नॉन इंपल्सिव. N1, N2, N1, N2, N3. Which one is impulsive and which one is non-impulsive? Ah. So this will be impulsive. This will be non-impulsive. This will be non-impulsive. Okay? Because velocity इस डायरेक्शन में है और ये आया और जब इससे ये इंटरेक्ट करेगा, that will produce a sudden spike in normal reaction, which will die down. Whereas N2 and N3 will have constant magnitudes. They will not suddenly change. Next. So we have this guy moving with velocity v collides with this guy, zero velocity. So we have N, we have N1 and we have N2.
which of these forces N, N1, N2, if any, will be impulsive, which will be non-impulsive? सोच के बताना. नहीं, कहीं friction नहीं. No friction is there. I'm just asking about normal reactions. Which of these normal reactions is impulsive? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है. Yes. Diksha, yes. Correct. Impulsive, non-impulsive, impulsive. ऐसा क्यों? Why? सर क्योंकि जब नॉर्मल एन आ रहा है तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी लग रहा है, तो N2 जो है वर्टिकली ऊपर ज़्यादा लगेगा, लाइक हाँ. इम्पल्स जनरेट होगा. So basically, if an object experiences an impulsive force in a particular direction, then that object is bound to move in that direction. Impulsive force, by definition, is a force which is huge and acting for a very short period of time. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगी तो वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में डेफिनेटली मूव करेगा. तो अगर ये छोटे वाले स्फीयर पे इस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगी है तो ये ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना ही करना है. In other words, I can say that this impulsive force has got a horizontal component which will result in an immediate escalation of the horizontal velocity of the object, and it has got a vertical component which will result in an immediate escalation, immediate change in the vertical velocity of the object. However, we know that the small sphere will not suffer any change in its vertical velocity because of the floor. And if it does not move downwards, okay, if the small sphere does not move downwards, that means that it is pretty much guaranteed that the vertical impulsive force on the sphere was balanced by another impulsive force. Because remember, impulsive force आप जिस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा. अगर नहीं किया इसका मतलब कि उसके ऊपर किसी और ने इम्पल्सिव फोर्स लगाई है और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके ऊपर इम्पल्सिव फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए. So this is the balancing impulsive force. Therefore, N2 must be impulsive, N must be impulsive, and N1 is non-impulsive क्योंकि N1 को कोई ट्रिगर नहीं, कोई उसको कोई टच नहीं.
So if I were to make a graph between the time and n, okay, if I were to make the graph between time and n, तो पहले तो जीरो है क्योंकि दोनों कांटेक्ट में नहीं है। फिर अचानक से कोलिजन हुआ, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुआ और वो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हुआ और फिर से दोनों अलग हो गए और ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। इम्पल्सिव। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन टाइम एंड n1, तो n1 की वैल्यू mg है, अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ी क्योंकि उसको ये n के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करना है और फिर वापस से mg हो गई। ये भी इंपल्सिव फोर्स। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी n2 नॉट n1, सॉरी n2, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन n1 एंड टाइम, तो n1 की वैल्यू mg रही, उसके बाद से क्या होएगा? कैन एनीबॉडी गेस क्या होने वाला है? n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n1 की वैल्यू डिप कर जाएगी, ड्रॉप होएगी। हाँ, ड्रॉप हो जाएगी। और हो सकता है कि n1 की वैल्यू जीरो हो जाए, हो सकता है n1 की वैल्यू जीरो ना हो, मेरे को नहीं मालूम है, बट उसके बाद से फिर से। तो ये इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज नाउ बिकमिंग सॉर्ट ऑफ क्लियर। अब बताओ, can you tell me what will happen to the tension, whether it is impulsive or non-impulsive? हाँ, very good. हाँ, बिल्कुल सही, सेम लॉजिक जो अभी मैंने लगाया था। This will be non-impulsive and this will be impulsive. हाँ, tension will be impulsive, tension will be non-impulsive. So the horizontal component of the force, of the impulsive force, will definitely give this object a velocity in this direction, definitely. But the vertical component of the impulsive force will not be able to give it a vertical velocity because the tension in the string will become impulse. Okay, good. Next. Setting up the impulse equations for impulsive forces. Right, so थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें एक साथ, I will be giving you a series of impulsive forces acting on a different set of objects, and we will set up some equations for these objects, and the equations will be impulse equations. So the situation is something like this.
there is a block of mass m, there is a block of mass m, there is a point particle of mass m which is located at a h height above. Particle falls and sticks to block, and we have to find the final velocity of all blocks. So I will just name these guys 1, 2, and 3, and I will set up impulse equations for the impulsive forces that are acting on the objects. So what do I mean by this? So when one collides with 2, the normal reaction between them is impulsive, and the tension in the string is also impulsive. For particle 1, I am taking the downward direction as negative. Okay? I'm taking the downward direction as negative. पार्टिकल 1 जब कोलाइड करेगा ये ब्लॉक से, तो पार्टिकल 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, पार्टिकल 2 ब्लॉक 2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा. So what do I mean by impulse equation, right? Please follow me very carefully. So the impulse due to the impulsive force of normal reaction on the particle 1 will be integral n dt. This will be positive because the value of the direction of n is upwards, and I have taken the downward direction as negative, upward direction is positive. Is equal to the change in momentum as a consequence of this impulsive force. So the downward velocity of the object 1 after collision, I don't know how much it is, whether it is downward or not, मेरे को कुछ नहीं मालूम. I'm just assuming that it is downwards, and I'm assuming that it is v. So the final momentum is minus mv. Minus initial momentum is minus m into root of 2gh. This is for particle 1. For block 2, ब्लॉक 2 के ऊपर नीचे की तरफ, ब्लॉक 2 के ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा है और ऊपर की तरफ टेंशन लगा है. ये दोनों impulsive forces. I will assume this time that, let's say that, चलो फिर से वही लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव. तो integral t dt, that is the impulse due to tension, minus n dt, that is the impulse due to normal reaction, is equal to, now since these two guys stick together, therefore since they stick together after collision,
Therefore, their velocities must be same after collision. And if I have assumed that the point particle is moving with a velocity v downwards, then this guy must also be moving with a velocity v downwards. Final momentum minus initial momentum. For block 3, I will assume that नीचे वाला डायरेक्शन ही नेगेटिव है जैसे हम करते आ रहे हैं. इसके ऊपर अपवर्ड टेंशन इंपल्सिव लगा है, तो इसके लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस इंटीग्रल टी डी टी is equal to final velocity, final momentum, sorry, minus initial momentum. Right? And now I'll add all the three equations up. Add them up. If I add them up, प्लस एम then भी होगा ना, हाँ, प्लस एम भी होगा ना सर. ब्लॉक 3 के इक्वेशन में प्लस एम भी होगा ना. अब ले सही हो गया ना, सही हो गया ना. यस सर. हाँ, मैंने नीचे पॉजिटिव ले लिया, मैंने जब लिख ही दिया है वैसा तो नीचे पॉजिटिव ही ले लिया, क्या फर्क पड़ता है. If I add up all the three equations, ndt, ndt, tdt, tdt, सब कुछ ऐड कर दीजिए, क्या आएगा. 0 is equal to 3mv plus m into root 2gh. V is equal to root 2gh. Right, so this is how you set up the impulse equation. तीनों को ऐड कर दिया तो देखा इक्वेशन समझ में आया. तीनों इक्वेशन समझ में आए. अच्छा, साइन का कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं, साइन का नहीं होना चाहिए. साइन का नहीं होना चाहिए. देखो, पार्टिकल 1 के लिए मैंने नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव दी हुई, इसका मतलब ये हुआ दैट दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. पार्टिकल 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है. और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल 1 की, व्हेन इट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक, आई हैव अज्यूम्ड इट इज डाउनवर्ड, सो फाइनल मोमेंटम इज डाउनवर्ड. Minus initial momentum anyways is downwards because it was falling down, right? It was released from a height of h. Therefore, just before colliding, its velocity was root 2gh downwards. Okay. For the block 2, I have taken the upward direction as positive. So the impulse due to tension is positive, but the impulse due to normal reaction is negative. Therefore, a positive sign here, a negative sign here. And this is equal to the final momentum of the block, because the block is sticking to the particle, because the particle is sticking to the block. Therefore, the velocity of the block after collision will be the same as the velocity of the particle. We have assumed that the velocity of the particle is v downwards.
Therefore, the velocity of the block must also be v downwards, and therefore the momentum of the block must be minus mv. For block 3, which is under the influence of only the tension impulsive force, I have taken the downward direction as positive, but the tension is upwards, therefore the impulse is upwards is equal to ये फाइनल मोमेंटम. अगर ये v से नीचे जाएगा तो ये v से ऊपर आएगा, because they are connected to each other by a string. So this is the final momentum minus the initial momentum, which was. आया समझ में अभी? Is it okay now? नहीं impulsive force. हाँ. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Now this is not necessary. So the question is कि ये सारे इंटीग्रल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. अगर मैंने आपको इम्पल्सिव फोर्स का नेचर नहीं दिया, अगर मैंने आपको बताया नहीं कि इम्पल्सिव फोर्स की टाइम के साथ क्या वैल्यू है, दैट मींस दैट यू कैन नॉट कैरी आउट दिस इंटीग्रल. It is impossible for you to carry out this integral. If that is the case, then definitely they will cancel out. And if that is not the case, then you can actually calculate the value of the integral, then you can calculate. Okay, so the next, sorry. So two particles on a smooth horizontal surface are connected to each other by a string of length L, which is less than it. At t is equal to 0, one particle is given a velocity v naught as shown. Find. L greater than ये होगा ना? हाँ, स्ट्रिंग टूट जाएगी अभी. क्या हुआ? सर L greater than ये होगा ना? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहा? सर L greater than ये होगा ना? हाँ. Find number 1, velocity of both particles as string becomes. Oh. You do part 1 and then I'll tell you what is part 2.
हाँ भाई रोहन, क्या वो कनेक्शन है? कनेक्शन कट गया है। नहीं नहीं आ रहा मतलब। चलो भाई देखो मैं करता हूँ। So the thing will start out like this, and ये किसका बताया फिर? पहले वाले का दूसरे वाले का? दूसरे वाले का, पहले वाले का वो जो पहले भेजा था वो है। मुझे कहाँ भेजा था ना? सही लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये सही। मेरे ख्याल से okay, so now the string becomes taut. The moment the string becomes taut, then there is a tension force like this. There is a tension force like this. This tension is impulsive. Okay. The velocity of the object will be v naught just before the string becomes taut. And this means that the velocity component here will be something and the velocity component here will be something. Basically, I'm finding the components of velocity parallel and perpendicular to the string. Now, if this angle is theta, then this angle will be 90 minus theta, and this will be v naught sine theta, and this will be v naught cosine theta. Now, after the string becomes taut, this component does not change. Immediately after, does not change. Okay, why does it not change? Well, simply because the tension is perpendicular. The impulsive tension is perpendicular. So the impulsive tension
changes this velocity component. Okay, so if I take this direction as negative and if I take this direction as positive, आप कोई भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता. Then for particle 1, I'm treating this as particle 1, this is particle 1. Minus integral t dt will be equal to final momentum in this direction, in the positive direction, minus the initial momentum in the positive direction. And for particle 2, I will take this as positive because दूसरे direction में तो कुछ होने ही नहीं वाला है. I will get then plus t dt is equal to final velocity, final momentum, sorry, minus initial momentum. Now I have taken the final momentum of both to be same, and that is because they are connected by a string. Therefore, their velocities along the string must be same. Okay? Therefore, their velocities along the string. अगर इसकी velocity v है, इसकी भी velocity v होनी चाहिए after decomposition. Add them up. 0. V is equal to v naught sine theta by 2. So for particle 2, velocity is equal to v naught sine theta upon 2, and sine theta is this root L square minus A square. A है. So this will be root L square minus A square by 2. For particle 1, velocity will be equal to L भी होगा ना? कहाँ पे बच्चा? हाँ सर पार्टिकल 2 के लिए सर यही भेजा था आपको, आपने देखा भी नहीं. मैंने देखा ना, मैंने बोला तो सही किया है. बोला तो मैंने उत्कर्ष का सही था और इसका पार्थ का सही था, लेकिन पार्थ ने दूसरे का नहीं भेजा ना, उत्कर्ष दोनों का भेजा है. वेलोसिटी अंशुल तेरा भी तो देखा तो मैंने. अंशुल तेरा नहीं आया. हाँ आया ना. हाँ तेरा सही बोला था ना, बिल्कुल सही. अंशुल का देख के ही मैंने बोला था उत्कर्ष का सही होना चाहिए. So this will be equal to this square plus this square. So V naught root of L square minus A square by 2L plus V naught cosine theta, which is equal to, cosine theta is equal to A by 2. Right? ये particle 1 की velocity है, ये particle 2 की velocity. Okay, please take a screenshot. Second part of the question is, if I can write.
find the tension in the string just after it becomes taut. चलो ठीक है. So I'll leave you guys now. We'll meet in the next class. Please do the second wala question. Please do the second wala question. And second part of this question, and I'll discuss it in the next class. किसी का कोई स्लाइड छूटा है जहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है? Anybody? सर इसके आगे वाला एक बार। हाँ ये यही वाला ना? हाँ सर ले लिया। हाँ सर ले लिया सर। हाँ ले लिया ना, हो गया ना? और कोई ये इसका 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 चलो ठीक है. So I'll see you guys in the next class. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं. हो गया सर, थैंक यू. Okay. चलो बाय बाय.